CAT aspirants, welcome to Super Grads. I am your English mentor, Sana Jafri, and I welcome you to this series of Word Power Made Easy. I hope you've been following the sessions, and I'm very sure that you've benefited from them as well. So, what are we doing today? We will be talking about how to talk about various speech habits. This covers session 24 to 27. So, yes, I'm trying my best to put up all the words, roots, and even exercises in a very concise way. So this session is going to be extremely packed. I'm going to save the labor of yours. आप 24 to 27 सारे सेशन पढ़ते हैं, मैं उसको बहुत ही condensed way में आज आपके सामने present करूंगी. I very much hope that you will understand and you will also enjoy. Right? So चलिए, without much ado, let's dive in the discussion. So, well, we often talk about words. Speaking is so important, right? Communication ना होता तो पता नहीं हम कैसे survive करते, क्या हम इतनी तरक्की कर पाते? Definitely not. So, speaking becomes very important, and hence an entire chapter has been dedicated to words related to speaking, right? So, these are some words that have been discussed in quite detail throughout these sessions. Fine. So, put them up in a very, very brief way. As we say, brevity is style. So, one by one, let's understand these words, right? The first one is laconic. Let's add some more color to whatever I am putting up, right? So, taciturn and laconic काफी मिलते जुलते words, right? दोनों का मतलब होता है कम बोलना. But taciturn would mean somebody who is generally unresponsive, who remains very silent. Fine. So such people come across as really blunt and terse and rude. Okay. So these people are terse. एकदम कट टू कट जवाब देंगे वो. For example, you meet someone and say, "Hey, how are you? It's been so long, and I was wondering where did you disappear? And I'm so happy to see you. बताओ कहाँ थे क्या थे?" I am good. सामने वाला सिर्फ इतना सा जवाब दे दे. You would wonder what's wrong. Such people who are naturally not very talkative, they are taciturn, right? They appear blunt. They don't really entertain people much. Okay, what is being laconic? Now, laconic is being brief, which I believe in today's fast paced world, being brief is very important. Being concise, speaking to the point without excessive usage of words, right? And yes, these people are meaningful. They make complete sense, right? So कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात convey कर देना is being laconic, right? Mostly in a positive sense हम इसको use करते हैं. Inarticulate. What is to articulate yourself? अगर हम किसी को articulate बोलते हैं, what does that mean? Such people are pretty expressive, right? And they know how to, they have the right expression for their feelings, and they're able to put across their emotions and thoughts and feelings very impressively. But if someone is inarticulate, they are incoherent, they are awkward. Sometimes when you are consumed by an emotion or you are overwhelmed by an emotion, that is when you may come across as a very inarticulate person, right? You may start rambling. आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप बहुत होता है ना कि बोल ही नहीं पा रहे हो या फिर हर कुछ बोल रहे हो, right? So this is being inarticulate. You of course won't make much sense. Logical connectivity नहीं होगी. Sometimes you may come across as a very gauche kind of a person who's very clumsy with speaking. Garrulous is someone who keeps on talking and talking and talking, often aimlessly. Bakar, 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 right? Somebody who prattles a lot, right? जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, but of course थोड़ा सा aimless talking लगती है उनकी. Their talking is aimless. They'll keep on speaking and speaking, okay, unnecessarily often. What is being banal? Now, being banal is a talking style which is rarely impressive because it lacks originality, right? जब आप एक ही चीज जो रिपीटेड है दसों बार वही रिपीट करते जाओगे, सो आई बिलीव दैट इज बेनल, राइट? दिस इज लैकिंग ओरिजिनलिटी. दिस इज जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा घिसा पिटा है. फाइन. पुरानी बातें हैं, वही चीजें बोल रहे हैं. एवरी टाइम यू राइट एन एप्लीकेशन यू से आई बेग टू इन्फॉर्म यू. वही जो सदियों से चला आ रहा है वही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो. यू नॉट बीइंग ओरिजिनल, राइट? सो वी कैन से बहुत ही क्लीशेड जो चीज है ना, या फिर बहुत ही ट्राइट है या हैकनेड है, right? That is actually being banal.
Verbose. Very nice. So verbose is being very wordy. What do I mean by being wordy? Wordy का मतलब क्या होता है क्लास? Being wordy means that बहुत सारे words लिख रहे हो, whether you are writing or you are speaking, ये word हम दोनों केस में use कर सकते हैं, right? So using a lot of words, going into over detailing, right? That is sometimes even repeating things, right? That is being verbose. Voluble. Now, people often think that being voluble is the same as being verbose, but class, please understand that voluble is when you are speaking very fluently and that too really rapidly. But at the same time, you are comprehensible. So थोड़ा सा हम इसको ऐसा नहीं है कि ये word बहुत ज़्यादा negative है. It's just a style of speaking where you are very fluent and भट बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो. So obviously you are a good speaker, I must say, and you have a lot to speak, yeah. So when you're voluble, you speak really fast, you are glib, you speak fluently and rapidly. All right. Cogent is something that I think every speaker or writer should be. A quality that I really wish to completely inculcate and imbibe in, right? तो मैं बोलूंगी कोजेंट वो बंदा है जो बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात रखता है, राइट? These people have a lot of logic, they have a lot of clarity. I believe teachers, lawyers, they should be very cogent. Their arguments should be convincing, clear, concise, right? Very, very logical, very coherent, right? Okay, what is vociferous? Vociferous, someone who is noisy, clamorous, okay, loud, clamorous. Fine, that is being vociferous. मतलब तो बहुत जोर जोर से बातें करना, right? A vociferous gang of teenagers, right? So that is the essence. Loquacious. Loquacious is also a person who is extremely talkative. Fine, जो काफी बातें करते हैं. So I believe this much is clear. Let's now proceed. This is a very simple exercise. I will step aside. You have to pause the video and you have to attempt these questions. This is going to be a nice and quick reinforcement of all the words that we learned in the previous slide. So let's do it. Yeah. Are we ready, class? All right. Do taciturn people, I hope you remember the word, right? Do taciturn people usually make others feel comfortable and welcome? This was the first word that we did. And yes, I hope you remember that these are the people who won't talk much. So will they be very welcoming? Are they going to talk and engage in conversations? The answer is no. Fine. Does a laconic speaker use more words than necessary? No. Laconic speaker एकदम brief में बात करना जानते हैं. ठीक है, बड़े smartly वो words को use करते हैं. Fine. So the answer is no. Does rage make some people inarticulate? Rage means extreme anger. तो जब extreme anger होता है ना, तब कई बार होता है that you're not able to speak properly, right? You just spurting out words. You're not articulate enough. So yes, the answer is yes. Is it interesting to listen to garrulous old men? Garrulous old men, people who are talking at length, aimlessly. हम जब जवान थे हम ये करते थे, हम जब बच्चे थे हम ये करते थे, पता नहीं क्या क्या कहाँ से कहाँ. Very meandering conversations, unending ones. Is it interesting to listen to them? No. Do Badal speakers show a great deal of originality? Are they original? Absolutely not. बहुत ही डल और 10 बार की बोली हुई बातें वो बोलते हैं. Originality? No. Is verbose a complimentary term? Verbose wordiness होती है और आज के जमाने में being excessively wordy, using too many words, getting into too many details. Is it easy to be voluble when you don't know the subject you're talking about? When you don't know the subject, can you speak rapidly and very fluently on the subject? No. Do unintelligent people usually make cogent statements? Unintelligent है कोई तो बहुत ही logical और convincing बात कर पाएगा? No. We all knows here, huh? Is a vociferous demand ordinarily made by a shy, quiet person? Can such people be very vehement in their demands if they're shy? No.
Do loquacious people spend more time talking than listening? You loquacious, right? So obviously आप इतना तो समझ में आ रहा है कि loquacious people would be talking more, right? More time talking than listening. The answer is finally yes. Chalo, khata khula yes ka bhi. Okay, so I hope you understood this. Now we will be talking about some very nice and very important root words that we find in these sessions. ठीक है? इन सेशंस में बहुत सारे रूट वर्ड्स थे. Patiently, one by one, हम इन रूट्स को पढ़ेंगे and a not really difficult class. Okay. Tassio. Tassio एक बहुत प्यारा रूट है जिससे taciturn बना and it actually means silent. ओके, तो टैसिटर्न बंदा साइलेंट ही तो होता, ज्यादा बात ही नहीं करता, राइट? टैसिट, टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट इज एन अनसेड थिंग, अ टैसिट अग्रीमेंट बिटवीन द टू. फाइन, मतलब किसी भी पार्टी ने कुछ बोला नहीं. It's an unsaid thing, it's a silent thing, but it is implied. So something which is implied, it is unsaid, बोली नहीं गई है, साइलेंटली है, बट दोनों पार्टी समझ रही है या फिर बिल्कुल implied है. Okay, so it is tacit that I will be coming to the session if I have a class. इसमें बोलने वाली क्या बात है ना? Just giving you examples. So इसके forms हो सकते हैं कि tacitly said this, या फिर rather tacitly adverb form हो जाएगा, tacitness इसका noun form हो जाएगा. Okay, चलिए. What is reticent? Another word which is very very similar to taciturn, which means reserved. तो ये लोग ऐसे हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, shy होते हैं, they normally for whatever reason, but they don't like to talk much. Okay, they're mostly silent. Fine, is this much clear? A very important root is lok. इस पे बात करते हैं. लोक का मतलब क्या होता है? लोक means to speak. All right? Okay. So loquacious, as we've already discussed, somebody who speaks a lot. Okay, is a very talkative person, someone who's really fond of speaking और बोलता रहता है. Okay. Soliloquy. Soliloquy, आप सोलो या सोली है ना, इससे समझे, which means single या फिर alone. अकेले में, लोग मीन्स बोलना, तो अकेले में बात करना, खुद से बात करना, राइट? सो सॉलिलोक्वी, ऑफन हम जब खुद से बात कर रहे होते हैं, वी डोंट स्पीक आउट, प्रोबेबली वी हैव लाइक सम इनसाइड वॉइसेस, मन में बातें हो रही हैं, या फिर हो भी सकता है आप कुछ बोलो अपने आप से अकेले रूम में. बट ये वर्ड जो है इतना इंपॉर्टेंट थिएटर या ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है, राइट? प्लेज वगैरह होते हैं, ड्रामा होता है, तो वहां पर कैरेक्टर्स कई बार soliloquy करते हैं so that the viewers are able to understand what is brewing up in the mind of all these characters, right? So this is the importance of this word soliloquy, and this is what this word was very commonly used, right? Okay, मतलब खुद से बात करना, कैरेक्टर भी soliloquy दे रहा, खड़े होके बात कर रहा है, राइट? और कोई कैरेक्टर्स वहां होते नहीं है टिपिकली. ओके, वेंट्रीलोक्विस्ट. वेंट्रीलोक्विस्ट एक्चुअली ये भी आपको रूट बताऊंगी मैं. वेंट्रिस का मतलब होता है बेली. फाइन, सो लोक इज बोलना एंड वेंट्रिस मींस बेली. तो वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है स्पीकिंग फ्रॉम द बेली. यानी आपने देखा होगा पहले पपेट शोज वगैरह ऐसे कुछ होता था, तो एक हाथ में पपेट पहन लिया और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और ऐसा आपको फील होगा कि वो पपेट बोल रहा है. Have you seen that? I'm sure you must have seen. Lip movement नहीं होता है बिल्कुल भी, कोई बोल ही नहीं सकता. Hello, how are you? इस टाइप से है ना. I know I'm not good at it. I'm not a ventriloquist. But lip movement नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है अंदर से आवाज आ रही है. अंदर से आप बोल रहे हो, not speaking from the mouth because there's no lip movement at all, right? ये एक स्किल है, ऑफ कोर्स ये डेवलप की जाती है. आई डोंट नो हाउ. वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं लोगों को, एंड द नाउन फॉर्म इज गोइंग टू बी वेंट्रीलोक्विज्म. कलोकियल, कलोकियल होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज. दिस इज अ कलोकियल वर्ड. डे टू डे कॉन्वर्जेशन में जैसे वर्ड्स चलते हैं, दैट इज बेसिकली कलोकियल. इज दिस मच क्लियर? ओके. Circumlocution. Can you see circum here? Circum का मतलब होता है सर्कल.
या फिर राउंड। तो circumlocution simply means घुमा फिरा के बात करना, beating about the bush, right? डायरेक्ट बात ना करना बल्कि गोल गोल बात करना। फाइन। Eloquent is someone who is like a very good speaker. They are fluent, they are articulate, right? An eloquent speaker. Magniloquent, अब यहां देखो मैग्नी और ग्रैंडी। देखो मैग्नी मीन्स लार्ज या ग्रेट, और ग्रैंड का भी तो मतलब ग्रेट ही होता है ना। So both of them would actually mean you are speaking in a very lofty language, बहुत ही showy and बहुत ही hi-fi type की language और expressions use कर रही हो। Phraseology is, very much high end, बहुत ही florid language का इस्तेमाल करना, that is being magniloquent or grandiloquent. I hope this much is clear. It was not at all difficult class. Let's proceed. So Magnus, originally it was Magnus. Magnus is large and great. थोड़े कुछ words इससे करते हैं फटाफट। Magnify, कोई चीज magnify करना as through magnifying lens, उसको enlarge करना। Fine. Magnanimous is a very large-hearted or a very generous kind of a person. He's a magnanimous person, बड़े दिल वाला है, ठीक है। Magnificent, कोई चीज मैग्निफिसेंट है, स्प्लेंडेड है, बड़ी शानदार है ना, बड़ी ग्रैंड सी लगती है, बड़ी ग्रेट लगती है। ही लिव्स इन अ मैग्निफिसेंट विला, ओके, इट्स ऑलमोस्ट पैलेशियल, इट्स लुक लाइक अ पैलेस, ओके। All right, magnet is a very important word. Magnet is basically a big wheel. What I mean, I simply means a big shot, और जिसको हम कहते हैं टॉप गन, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन, है ना। वो बंदा जो बड़ा ग्रेट स्टैंडिंग है उसकी पूरी इंडस्ट्री में, बड़ा पावरफुल है, बड़ा नोन है, राइट। सच अ पर्सन इज एक्चुअली अ मैग्नेट। ही इज अ कॉर्पोरेट मैग्नेट, ही इज अ टाइटन इन द इंडस्ट्री, ही इज अ मैग्नेट, राइट। मैग्नम is actually a large bottle, often a bottle of whiskey or champagne. Magnum opus is a very important word. तो ये कुछ words है ना जो बहुत important है. So let's understand what is magnum opus. Opus refers to work and magnum means large. So it means a large work of any artist, writer, right? Anybody. So magnum opus literally means a large work, but as such magnum opus हम ऐसे use करते हैं in the sense of the best work, है ना। किसी भी परफॉर्मर का, राइटर का, आर्टिस्ट का, पेंटर का जो बेस्ट वर्क होता है उसको हम कहते हैं मैग्नम ओपस। आई होप दिस रूल इज क्लियर, इट वाज सिंपल। वर्बम, व्हाट इज वर्बम क्लास? वर्बम का मतलब होता है वर्ड, इसी से बना था द वर्ड वर्बोस, है ना। बहुत सारे वर्ड्स होना, ठीक है। अब आप सोचो कि मैम तो फिर ग्रामर में जो वर्ब होते हैं तो क्या उसका मतलब वर्ड ही होता है? ओके, सो ये मत सोचना कि वर्ब का मतलब एक्शन ग्रामर में होता है तो वर्बम इज आल्सो एक्शन और समथिंग। नो, नो कंफ्यूजन प्लीज। ये समझो कि ग्रामर वाला जो वर्ब होता है ना, so it is a very important, almost the most important part of a sentence, right? It's the most important word. यहीं से उसका जन्म हुआ, जेनेसिस इस वर्ड का यहीं से हुआ है, right? That's a very crucial word in a sentence, right? Okay. Verbose being very wordy, बहुत लंबे लंबी sentences बोलना। Verbatim is very important. It means word for word. मतलब अगर किसी की बात को आप एज इट इज कोट करते हैं, जैसे उसने यूज किया, जैसे उसने बोला, तो हम बोल रहे हैं दिस इज वर्बैटिम, ही यूज्ड एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज। डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी डेरोगेटरी रिमार्क, है ना। तो वर्बैटिम मतलब एकदम हूबहू, वर्ड फॉर वर्ड, एज वी से, राइट। वर्बल, एनीथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वी से वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो वर्ड से जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं बोलकर या फिर लिखकर, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वे वी नॉट यूजिंग एनी वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल द साइन लैंग्वेज, राइट।
या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज. फाइन. सो वर्बल, नॉन वर्बल. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड. वर्बिएज. वर्बिएज के होते हैं बेटा दो मतलब. एक तो उसका मतलब हो जाता है द स्टाइल ऑफ राइटिंग, जहां पे आपका स्टाइल या डिक्शन हो जाता है. एंड ऑफन इट रेफर्स टू टेक्निकल लैंग्वेज, है ना. तो वो जार्गन्स वाली, फॉर एग्जाम्पल इन द मेडिकल वर्बिएज यू विल फाइंड दिस वर्ड वेरी कॉमन. मेडिकल वर्बिएज. इज दिस मच क्लियर? अब दूसरा एक वर्ड होता है, वो क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग, दैट इज ऑफन वेरी सिमिलर टू verbose, being very wordy. His content was good, but the verbiage made it difficult to understand and slightly boring. समझ आया? Okay. So ये बहुत important root हमने cover किया. Let's move to the next one. Volutus और volvo, which means to roll. Roll. अब आप सोचेंगे roll कैसे आ गया? मतलब voluble बंदा वो होता है who speaks very rapidly, very fluently, है ना. तो आई एम श्योर यू आर वंडरिंग कि इसका रोल से क्या कनेक्शन है. कनेक्शन तो है भाई. क्या? अ वॉल्यूबल पर्सन वुड वेरी इजीली roll out words from his mouth, है ना. इतना फास्ट, इतने कन्वीनियंटली लगता है वर्ड्स फिसल रहा है मुंह से, है ना. दैट इज द कनेक्शन विद रोलिंग. इज रोलिंग आउट वर्ड्स. खड़े खड़े इतना तेज तेज बोल रहा है. And it's not nonsense. He's not just jabbering. He's making sense also at the same time, right? So such a person is voluble. Fine. Volutus या volvo इससे बना. Revolve. अब revolve करना, a kind of a spinning motion, है ना. Revolve करना, rolling around, है ना. Earth is revolving या इस टाइप का कुछ भी, तो rolling around से मतलब होता है. Revolution. अब रेवोल्यूशन तो आप जानते हो, मतलब अ काइंड ऑफ अ रेडिकल चेंज, है ना. अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल अपहीवल भी हो सकता है. तो उसका रोल से क्या कनेक्शन है? सिचुएशन को फुली रोल कर दिया आपने, एकदम टर्न अराउंड हो गया, है ना. बिल्कुल एकदम 360 डिग्री बदल के रख दिया उसको. सो हेंस द कनेक्शन, राइट. रेवोल्यूशन. इन्वॉल्व. किसी को इन्वॉल्व करना सिंपली वुड मीन टू रोल इन समवन, है ना. इन्वॉल्व करना, आई थिंक यू शुड इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दिस डिसीजन. Evolve. Rolling out. In the sense of very gradual development of something. So when something rolls out to be something else altogether, a gradual development, right? Evolve. आप तो जानते हो, it's a very common word. Human evolution, है ना. I hope this much is clear. Okay. Fine. ये word यहाँ पे है, but it has not got much to do with it, right? आगे बढ़ते हैं. So, finally, we have an exercise, right? Class, I want you to try this. सबको try करना है. Pause the video. I am stepping aside. Pause the video. Solve this exercise, and I will take this further. Okay, I hope you've done it. Yes? All right. Laconism. What is being laconic? बताइए. लेकॉनिक होना क्या होता है? लेकॉनिक तो होता है बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना. ठीक है. ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच हो सकता है. देखते हैं, अभी अभी देख लेते हैं. इलोक्वेंस बीइंग वेरी फ्लुएंट, है ना. फ्लुएंसी. बट यहाँ पे फ्लुएंसी इज रैपिडिटी जो बोल रहा है ना, तो ये तो होना चाहिए बीइंग एक्चुअली वॉल्यूबल. तो 5 मुझे लग रहा है एच. ठीक है. इजी वाले पहले कर लेते. मैग्नम ओपस क्या होता है? बेस्ट वर्क, है ना. मास्टरपीस डी हो जाएगा. मैग्नेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सी हो जाएगा. रेवोल्यूशन इज अ कंप्लीट चेंज, है ना. रोलिंग अराउंड रेडिकल चेंज. एवोल्यूशन. व्हाट इज एवोल्यूशन?
ग्रेजुअल अनफोल्डिंग और डेवलपमेंट। कोजेंट होना मतलब बड़ा कन्विंसिंग होना, एकदम लॉजिकल होना। क्या हो सकता है ये? बताइए बताइए, जल्दी 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 जल्दी। या सामने के सामने ही था, राइट। इलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, magniloquence. I would say eloquence would be great artistic or emotional expressiveness because you're expressing yourself really well, right? तो वो I हो जाएगा. Fine. Verbosity, using too many words, wordiness, ये हो जाएगा J, है ना? Garrulity, बहुत ज्यादा बातें करना, उसका ज्यादा मीनिंग नहीं निकलता, aimless chattering हो जाएगा B. Fine. एंड फाइनली मैग्निलोक्वेंस, वी ऑलरेडी नो, पोम्पस बातें करना, बहुत ही फ्लोरिड स्पीच का इस्तेमाल करना, ए. अब जो बचा वो है लेकॉनिक, राइट। ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, पहले ही हमने सोचा था। कई बार मैच द फॉलोइंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज यू नो सो मेनी वर्ड्स एंड देन यू हैव टू वर्क योर वे थ्रू। तो इजी वन जिनके लिए आप श्योर हो उनको पहले सिलेक्ट करो, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो काफी ओवरलैपिंग है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। चलें फटाफट आगे बढ़ते हैं। somnus, somnus या somni means sleep. Okay, so we have these words insomnia. Fine. अब देखो, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये भी एक टाइप की स्पीकिंग है, राइट। इससे ही ये बेसिकली हम सोमनी पे आए, अदरवाइज हमें इससे स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं था। सोमनी लोक्विस्ट, सोमनी लोक्वेंस जो होता है, सोमनी का मतलब होता है स्लीप, लोक का मतलब होता है बोलना, तो बेसिकली दिस मीन्स स्लीप टॉकिंग, नींद में बड़बड़ाना, नींद में बातें करना। कुछ लोगों के साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कभी ना कभी इट्स वेरी नेचुरल कि आप कुछ नींद में बड़बड़ा दो, बट सम पीपल डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। वो होता है सोमनीलोक्विस्ट, राइट। इनसोमनिया, इन मतलब नहीं, स्लीपलेसनेस बेसिकली जब आपको नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस, right? Somniferous, what is somniferous? It is sleep causing or sleep inducing. The lecture was so boring, it turned out to be sleep causing, sleep inducing. Somniferous history lecture by a very boring teacher. Somnolent is simply sleepy or drowsy. Okay, class? So, ये भी speaking से related हुआ, somniloquist हम आपको बताना चाहते थे, right? So, somebody who does sleep talking is somniloquist, and thereby we also discussed the root somnus या somni, which means sleep. Ventris. Remember we studied ventriloquist? Yes. So ventriloquist who speaks from the belly क्योंकि उसका कुछ mouth movement नहीं पता चलता है. So ventris actually means belly. Okay. Ventral side is the belly side. किसी भी एनिमल का वेंट्रल साइड होता है जो उसका फ्रंट साइड होता है बेली वाला, और जो डोर्सल साइड होता है वो उसका बैक साइड होता है पीछे वाला. So ventral, belly side, the front side. Okay. Ventricle is a kind of chamber of the heart. एक तरह से चेम्बर है दिल के अंदर, तो इट्स समवेयर इनसाइड द हार्ट, द बेली ऑफ द हार्ट, द कोर ऑफ द हार्ट. यहां से ये मतलब ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ. जस्ट लेटिंग यू नो, सी एटिमोलॉजी इज अबाउट स्टडिंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, राइट. ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद ऑल दीज वर्ड्स. चलिए, ambulo means walk. Amble is simply to walk, right. हमने आई थिंक सोमनी पे डिस्कशन किया था, तो सोमनी तो स्लीप होता है और एम्बल वॉक होता है, तो सोमनैम्बुलिज्म मतलब स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना. तो ये भी एक बीमारी होती है, सोते में से नींद में चलने लग जाते हैं लोग.
एम्बुलेंस, वी ऑल नो अबाउट एम्बुलेंस, बट तुम जहां बुलाओ वो वहां आ जाती है. एम्बुलेंस वॉक्स टू योर होम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हेंस द नेम एम्बुलेंस. एम्बुलो से ही आया ये. ओके, एम्बुलेटरी. जब हम किसी को एम्बुलेटरी बोलते हैं, मोस्टली हम पेशेंट्स के सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं, या फिर जो बुजुर्ग होते हैं, द ओल्ड पीपल, उनके सेंस में यूज करते हैं. अगर हम बोल रहे हैं एम्बुलेटरी, मतलब दे कैन वॉक. एम्बुलेटरी पेशेंट्स कैन वॉक. बीमार भले वो हो लेकिन चल फिर सकते हैं. बूढ़े भी जो होते हैं, जैसे जैसे वी एज, हमारी बॉडी स्टार्ट्स गिविंग अप, राइट? वी गेट सो मेनी डिजीजेस, वी गेट लॉट ऑफ डेबिलिटी. बट इफ यू आर एम्बुलेटरी, यू कैन वॉक, यू आर केपेबल इनफ. प्रीएम्बल, प्री मतलब पहले, तो लिटरली इट मीन्स इट वॉक्स बिफोर समथिंग. सो इट एक्चुअली मीन्स एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे पहले जो चीज आ रही है वो इंट्रोडक्शन है, वो प्रीएम्बल है. तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? तो ये तुम्हें हो सकता है, you might find it a little awkward, but then this is how these words have actually evolved and originated. So this is what is discussed in the book, a perfect and detailed etymology of the words. Ambulance, somnambulism, perambulate क्या होता है? Simply walking around, घूमना, just strolling around, that is perambulate. I hope you will remember these words. They're not that difficult. And finally, an exercise to check whether you remember these words or not. So I'm stepping aside. You have to pause the video and solve these. Yes, students. Are we ready? Are we done? Okay. Does an insomniac often need a soporific? Now, I hope you know soporific. If you don't know soporific, you'll be in trouble. Soporific is something which is somniferous, okay, which is sleep inducing, something that will cause you to sleep. तो एक इंसोम्नियाक है जिसको नींद नहीं आती, तो उसको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, एक सेडेटिव या फिर एक ट्रैंक्विलाइजर या फिर कोई नींद की दवा जिसको हम कहते हैं. सो इट इज यस. डज अ somnambulist always stay in bed when asleep? somnambulist है तो नींद में चलने की बीमारी है, क्या वो बेड में रहेगा? नो, he will maybe while sleeping he will walk around, right? Are ambulatory patients bedridden? Ambulatory है तो they can walk. Are they bedridden? No. Does a preamble come after another event? No. Preamble is the first thing, right? So, no. Are articulate people verbal? क्या articulate लोग verbal होंगे? Of course. भाई आपको अगर किसी भी टाइप का articulation करना है, you have to express yourself, तो obviously you will use words, right? Answer is yes. Does banality show creativeness? हाँ, क्या banality creativeness show करती है? नो, बिकॉज बेनल पीपल स्पीक घिसी पिटी बातें, क्लीशेड बोलते हैं, कुछ ओरिजिनल नहीं बोलते. इज अ somnolent पर्सन वाइड अवेक? somnolent मतलब स्लीपी, ड्राउजी. इज ही वाइड अवेक? नो. इज अ somniferous स्पीकर एक्साइटिंग? somniferous, I hope you remember, sleep inducing, क्या वो एक्साइटिंग होता है? The answer is absolutely not, right? And with this, we come to the end of our session. Class, I tried my best to put up all the words, all the important root words. I've given you good coverage in the simplest possible way, right? So I hope you benefited. I hope you enjoyed the session, and stay glued to our series. Watch all the sessions, keep reading, keep studying, and stay good. Bye bye. Signing off. Thank you so much.